group in backward area, promoting the financial inclusion in the country, and providing a financial help to the marginalized communities. So here the term financial inclusion is broad term. So शायद थर्ड होना चाहिए आंसर. ठीक है, थर्ड. देखते हैं क्या है. हाँ, तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट इज सही है. तो यहाँ क्या है, प्रधानमंत्री जन धन योजना, इट इज़ अ नेशनल मिशन ऑन द फाइनेंशियल इंक्लूजन which has an integrated approach to bring about a comprehensive financial inclusion, and it provides banking services to all the households in the country. Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, it is one of the biggest financial inclusion initiative in the world, and it is announced on 15th of August 2014 को अनाउंस किया गया था. ठीक है, 15th of August 2014 को अनाउंस किया गया था. Now next question. विथ रेफरेंस टू द 14th फाइनेंस कमीशन. यहाँ पे 14th फाइनेंस कमीशन की बात हो रही है. अभी तो 16th फाइनेंस कमीशन है फिलहाल. तो रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं है, बट देख लेते हैं. 32% to 42% डिविजिबल पूल इंक्रीज हुआ है. ठीक है, शेयर ऑफ द स्टेट इन द सेंटर डिविजिबल पूल 32 to 40%, 42% इंक्रीज हुआ है. ठीक है. सो हियर द सेंट्रल डिविजिबल पूल, ये वो अमाउंट होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंड करती है के साथ शेयर करती है एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन विच इज़ मेंशन इन आर्टिकल 280. ठीक है. सो जो अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर करती है एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन इज कंसिडर टू बी द डिविजिबल पूल. सो ये सही है. 32 से 42% है. अभी करेंटली कितना चल रहा है? 41% चल रहा है. ठीक है. इट हैज़ मेड रिकमेंडेड concerning the sector specific grant. No, this statement is wrong. ये current affair based question है. ठीक है. Only first statement is correct. ठीक है. Now next question is Fordzilla declaration. What is Fordzilla declaration related with? Fordzilla declaration is related to BRICS. What is Fordzilla declaration? Fordzilla declaration is related with BRICS, and it's significant for establishment of new development bank, and it provide a financial support for the infrastructure project, economic stability among the member countries. ठीक है, BRICS से related है Fordzilla's declaration. आसियान सबको पता होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सबको पता होता है. OECD कंट्री क्या है? OECD's country is nothing but it is the Organization of Economic Cooperation and Development. Basically ये India is not a part of it, and ये कौन सा रिपोर्ट रिलीज़ करता है? बेटर लाइफ इंडेक्स, ग्लोबल टैक्स इंडेक्स, ये सब रिलीज़ करता है, और ये डेवलप्ड कंट्री का मोस्टली होता है. सो थर्ड स्टेटमेंट ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. A decrease in the tax of GDP ratio. Decrease in tax to GDP ratio. ठीक है, tax to GDP ratio डिक्रीज हुआ है. ठीक है. डिक्रीज कब होगा? या तो टैक्स कम रिसीव हुआ होगा और जीडीपी ज़्यादा. सो ऐसा है. तो यहाँ पे डिक्रीज इन टैक्स टू जीडीपी रेशियो क्या इंडिकेट करता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्या इंडिकेट करता है? क्या वो स्लो ग्रोथ रेट को इंडिकेट करता है? क्या वो लेस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेशनल इनकम को डिनोट करता है? क्या डिनोट करता है? नहीं पता, देखते हैं. सो यहाँ ऑप्शन 1 है, दैट इज स्लोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, लेस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, ये शो नहीं करता है. ठीक है. सो टैक्स टू जीडीपी रेशियो इज अ नेशनल टैक्स रेवेन्यू related to the size of its economy as it measure the gross domestic product. GDP measure करता है. Tax to GDP ratio measure the national tax revenue. Tax, हमें कितना टैक्स रिसीव हुआ है. ठीक है. Tax to GDP ratio is a measure of the national tax revenue related to the size of the economy. It determines how well a national government used its economic resources via taxation. डेवलप्ड नेशन टिपिकली हैव हायर टैक्स. जो भी डेवलप्ड नेशन होगी वो ज़्यादा टैक्स रिसीव करेगी, टैक्स टू जीडीपी रेशियो, एंड देन द डेवलपिंग नेशन. इफ़ द टैक्स टू जीडीपी रेशियो इज़ लो, अगर टैक्स टू जीडीपी रेशियो लो है, इट शोज़ अ स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट. तो इससे क्या होगा? स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट होगा.
The ratio represents that the government can finance its expenditure. Higher tax to GDP ratio, what do you mean? It means that the economic tax buoyancy is strong. मतलब ज़्यादा tax receive हो रहा है. It means economic growth कर रही है, grow कर रही है. A low tax to GDP ratio put a pressure on the government to meet its fiscal deficit target. हाँ, tax कम हो रहा है, तो ये it will puts a pressure on the government to meet its fiscal deficit. Reason behind low tax to GDP ratio क्या हो सकता है? It may be the drop in the custom revenue, drop in the corporate tax, excessive subsidies and revenue expenditure. It only shows a growth in the economy, not the distribution of national income. Hence, statement 2 is correct. तो ये क्या शो करता है? इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को शो करता है, बट ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम को शो नहीं करता है. ठीक है. Now question number 5. In the South Atlantic and Southeast Pacific region in tropical latitude, very generic question. क्या reason हो सकता है? Does not originate. What is the reason? So of course intertropical convergence zone B. Which of the following pair of the state in India indicate a eastern and western most? बहुत आसान है. It is Arunachal Pradesh and Gujarat. Now next question is question number 7. Consider the following statement regarding the directive principle of state policy. The principles spell out the socio-economic democracy in the country, and the provision contained in this principle are not enforceable by any court. ठीक है, तो of course not enforceable in any court, enforceable नहीं होता है. Which of the following above is correct? The principles spell out the socio-economic democracy in the country. Of course, both the statement are correct. Option C. 8 core industries. So PPI index of 8 core industries, which of the following given is the highest weightage? तो अभी करेंटली क्या है? इलेक्ट्रिसिटी को हाईएस्ट वेटेज है. पहले रिफाइनरी को होता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी को होता है. ठीक है. सो इसके बारे में थोड़ा रीड करते हैं. The monthly index of 8 core industries is a production value index. 8 core industries, it is a production volume index, and it measures a collective and individual performance of the production in a selected 8 core industries. For example, coal, crude oil, natural gas, refinery product, fertilizer, steel, cement, and electricity. It is compiled and released by Office of Electronic Advisor, Department of Industrial Policy and Promotion DIPP, and Ministry of Commerce and Industries के अंदर आता है. The Index of Industrial Production, it shows a growth rates in different industries group. ठीक है. कौन कौन सी इंडस्ट्रीज, 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन होती है? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर के अंडर आता है. डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड पॉलिसी DIPP, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन. 8 core industries include refinery products, electricity, steel, coal, crude oil, natural gas, cement, and fertilizer. And the base year for ठीक है, बेस ईयर क्या है? 2011 एंड 12. एंड द प्रीवियस इलेक्ट्रिसिटी हैज़ बीन द हाईएस्ट वेटेज. करेंटली रिफाइनरी प्रोडक्ट किसको दिया गया? रिफाइनरी प्रोडक्ट को दिया गया हाईएस्ट वेटेज. ठीक है, ये किसके अंदर आता है? ये इंपॉर्टेंट है. ये तुम्हारा डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री पॉलिसी एंड प्रमोशन के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है. ये ग्रोथ शो करता है इन 8 कोर इंडस्ट्रीज. इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज यूनिक बीइंग अ स्वैम्प विथ फ्लोटिंग वेजिटेशन दैट सपोर्ट्स अ रिच बायोडाइवर्सिटी? ऑफ कोर्स ये तो तुम्हारा केबुल लिमचा नेशनल पार्क विच इज़ इन मणिपुर. भितरकनिका कहाँ पे? उड़ीसा में. किला देव कहाँ पे? राजस्थान में. एंड सुल्तानपुर इट इज इन हरियाणा. क्वेश्चन नंबर 10. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन? National Innovation Foundation, it is an autonomous body of the Department of Science
and Technology under the central government? No idea. National Innovation Fund, it is an initiative to strengthen the highly advanced scientific research in India's premier scientific institutions in collaboration with highly advanced foreign scientific institution. So ये भी काफ़ी extreme है, that is highly advanced scientific research in India's premier scientific institution in collaboration with highly advanced foreign scientific institution. Or NIF, it is an autonomous body of the Department of Science and Technologies under central government. कोई आइडिया नहीं है कि फर्स्ट होगा कि सेकेंड होगा, बट यहाँ पे ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. National Innovation Fund, it is an autonomous body and set up in March 2000 with assessment of Department of Science. ठीक है, किसके अंडर आता है? With the assistance of Department of Science and Technologies, it comes under central government at Ahmedabad, Gujarat. Hence statement 1 is correct. Vision क्या है? It is India's national initiative to strengthen the grassroots technological innovation and outstanding traditional knowledge. Hence, statement 2 is not correct. Its mission is to help India's become creative and knowledge-based society by expanding the policy and institutional space for grassroots technological innovation. ठीक है. It comes under the central government and Department of Science and Technology. Now question number 11. Which can be the impact of excessive inappropriate use of nitrogenous fertilizer in agriculture? Proliferation of nitrogen fixing microorganism in the soil can occur. Increase in the acidity of the soil can take place. Leaching of nitrate to the groundwater can occur. So here option 2 and 3 is correct, 1 is wrong, because यहाँ पे बोला है proliferation of nitrogen fixing microorganism in the soil can occur. It means कि ज़्यादा से ज़्यादा nitrogen fixing microorganism, for example azotobacters or rhizobium, can increase. बट इनअप्रोप्रिएट और ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करने पे क्या होता है, वो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो डिक्रीज हो जाती है. प्रोलिफरेट मीन्स इंक्रीज होना, बट नाइट्रोजन फिक्सेसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल जो है वो डिक्रीज हो जाती है, ना कि प्रोलिफरेशन होता है उसका. सो हियर द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सो विल लिफ्ट विथ ओनली 2 and 3. ठीक है. Now question number 12. With reference to the International Union of Nature and Natural Resources, that is IUCN, and Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna CITES, which of the following statement is or are correct? IUCN is an organ of United Nations and CITES is an international organization agreement between the government. IUCN runs thousands of fields projects around the world to better manage the natural environment. CITES is legally binding on the states that have joined it, but this convention does not take the place of national law. ठीक है, तो सबसे जेनेरिक स्टेटमेंट ये तो होना चाहिए. ठीक है, सबसे जेनेरिक स्टेटमेंट सेकेंड स्टेटमेंट है. सेकेंड होना चाहिए, सेकेंड होना चाहिए, सेकेंड होना चाहिए. ए कौन, सी कौन? IUCN, it is an organ of United Nation. कहीं नहीं पढ़ा है कि IUCN is an organization of United Nation. So again one is gone, D is gone, A is gone. We left with on option B. So here third statement is correct. In fact, the term legally binding is also correct. CITES is legally binding on the states that have joined it, but this convention does not take the place of the national law. ठीक है, ये भी correct है. बट यहाँ पे IUCN is an environmental organization which is founded as an international union
founded as an international union for the protection of nature in October 1948. It promotes the nature conservation and ecologically sustainable use of natural resources. IUCN for Conservation of Nature and Natural Resources in 1956. IUCN is composed of both the government and civil society organization which harness the experienced resources. Headquarters is in Switzerland. IUCN maintains IUCN Red List of Threatened Species which was established in 1964. IUCN played a fundamental role in creation of key international conventions including Ramsar Sites of Wetland, World Heritage Convention, Heritage on International Treaty Endangered Species, Convention of Biological Diversities, UNFCCC, and Caring for Nature was published by three organizations in run up to the Earth Summit. Now, IUCN was granted official observer status at the United Nations General Assembly. IUCN activities are organized into several theme-based programs. It is not the organ. In fact, it granted an official observer status at the United Nations General Assembly, UNGA. ठीक है? The IUCN activities are organized into several theme-based programs ranging from business, biodiversity to forest conservation and wetland conservation. IUCN funding comes from several government agencies. Now, CITES. CITES is Convention on International Trade in Endangered Species um, to regulate the worldwide commercial trade in wild animal and plant and animal to ensure the international trade does not threaten the survival of any species. CITES is legally binding on state parties on the convention, but it does not take place of the national law. ठीक है. सो अभी करेंटली इसमें कितने कैटेगरीज है? अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 3. लिस्ट इंडेंजर्ड रिस्क टू एक्सटेंशन, अपेंडिक्स 2. नॉन थ्रेटेड कैटेगरीज, अपेंडिक्स 3. Species are protected in at least one country that is CITES member and that the petitioned other for help in contracting the international trade in that species. In addition to plant and animal and their part, the agreement also restricts the trade in items made from such plant and animal such as clothing, food, medicine and souvenir. ठीक है. So either CITES is a legally binding on the state parties to the convention, but it does not take place of the national laws. Rather, it provides a framework to be respected by each party which has to adopt its own domestic legislation. Now question number 12, FRP, तो easy question है. Fair and remunerative sugarcane is approved by CC Cabinet Committee on Economic Affair. ठीक है. कौन अप्रूव करता है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर. और एक बॉडी होती है CACP. फाइनल रिकमेंडेशन तो ये देती है, बट एक और बॉडी होती है दैट इज कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस. ये रिकमेंडेशन देती है, फिर उसको फाइनली रिकमेंड कौन करती है? CCEA. ठीक है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14. व्हाट एक्सप्लेन द ईस्टर्न बोर्ड फ्लो ऑफ द इक्वेटोरियल काउंटर करंट? व्हाट एक्सप्लेन? इट इज द convergence of two equatorial current. Now question number 15. Sri Shailam, Omkareshwar and Pushkar. So here Sri Shailam, it is in AP. ठीक है. Nallamala, it is also in near AP. तो first हो सकता है. Now Omkareshwar and Satmala hills. No idea. Pushkar and Mahadev hills. Pushkar नो आइडिया. ठीक है. सो ये इधर ये हो सकता है राजस्थान साइड, और महादेव हिल्स तो तुम्हारा देखते हैं. देखो यहाँ पे फर्स्ट होना चाहिए. 2 एंड 3 को कोई आइडिया नहीं है. ठीक है. देखो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज श्रीशैलम टाइटल, श्रीशैलम इट इज सबको पता होता है
It is in the flat top of Nallamala Hills. It is in AP. So first statement is correct. Sri Omkareshwar. Omkareshwar is situated on Mandata Hills of MP. So Omkareshwar temple कहाँ पे? It is in MP. Omkareshwar is situated in Mandata Hills. It is situated in Mandata Hills in Madhya Pradesh. Hence, statement 2 is correct. River Narmada flows here around the Mandata Hills in the form of Om, which give Omkareshwar. Omkareshwar is a Hindu temple dedicated to Lord Shiva. It is one of the two revered Jyotirlingas shrine of Shiva. So Omkareshwar temple कहाँ पे है? Omkareshwar temple it is in Madhya Pradesh. विंध्यन एंड सतपुरा रेंजेस और उधर होगा, बट सतमाला हिल्स नहीं होगा. ठीक है, सतमाला हिल्स नहीं होगा. देन पुष्कर महादेव हिल्स. महादेव हिल्स आर द रेंजेस ऑफ द हिल्स ऑफ एमपी. महादेव कहाँ पे है? एमपी में, सबको पता है. इट इज़ इन एमपी. देन ये पुष्कर तुम्हारा राजस्थान साइड है. एमपी स्टेट ऑफ सेंट्रल इंडिया. हेंस स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट बिकॉज पुष्कर इज इन राजस्थान. पुष्कर कहाँ पे? राजस्थान में. एंड पुष्कर इज फेमस फॉर द रेड स्पाइरल्ड ब्रह्मा टेम्पल. पुष्कर इज लोकेटेड ऑन द शोर ऑफ पुष्कर लेक. ठीक है, पुष्कर कहाँ पे? राजस्थान में. महादेव इट इज एमपी. ओमकारेश्वर टेम्पल एंड सतमाला. सो ओमकारेश्वर इट इज इन एमपी एंड सतमाला कहाँ पे? ये शायद महाराष्ट्र में है सतमाला. महाराष्ट्र नासिक. महाराष्ट्र नासिक में. ठीक है. Now question number 16. With reference to the Rowlatt Satyagraha, which of the following statement is or are correct? Rowlatt Act has been on the recommendation of the Sedition Committee. The Rowlatt Satyagraha, Gandhiji tried to utilize the Home Rule League. Demonstration against the arrival of Simon Commission coincided with Rowlatt Satyagraha. So Simon Commission 1927. Rowlatt Satyagraha approx 1919. कोई मैच नहीं है. थर्ड गया. इधर 1 और 2. 1 होगा, 1 होगा, 2 को चेक करते हैं. In Rowlatt Satyagraha, Gandhiji tried to utilize the Home Rule League. Of course, second statement is correct. So option B. So now next question is question number 17. Among the following, which one frequently mentioned in the news for the outbreak of Ebola virus recently? अभी relevant नहीं है, but इसका आंसर है option B. Guinea, Sierra Leone and Liberia. Now question number 18. With reference to fly ash produced by the power plant using coal as a fuel, which of the following statement is or are correct? Fly ash can be used in the production of bricks for building construction. हो सकता है. Fly ash can be used as a placement of some of the Portland can be used as some of the Portland cement content of concrete. Fly ash is made up of silicon dioxide and calcium oxide only. Does not contain any toxic element. Third statement con. Third statement con. We left with the option A. देखते हैं क्या है आंसर. हाँ, 1 and 2. Fly ash is a finely divided residue that results from the combustion of pulverized coal and is transported from the combustion chamber of exhaust gases. Fly ash is produced by the coal-fired electric and steam generating plant. Fly ash is used annually in a variety of engineering applications that includes Portland cement, concrete, soil and road-based stabilization. Flowable fields.
grouts, structure fill, and asphalt fillers. Portland cement embankments, embankment soil stabilization, flowable fields, asphalt concrete, geopolymers, roller compacted concrete, bricks, metal matrix, composites, waste treatment and stabilization catalyst. Environmental benefit, characteristic size and shape, chemistry. ठीक है. It is primarily composed of oxygen of silicon. It is composed of oxygen of silicon, aluminum, iron, and calcium. Magnesium, potassium, sodium, titanium, sulfur are also present to a lesser degree. Okay, so third statement gone. We left with option 1 and 2.